Good morning, students. We are continuing in the stationary waves. We are continuing the stationary waves, and I told you in the last class that we have discussed in the last class the vibration in the stretched string. Once I just tell you here, for a stretched string, you just try to recall your memory, or you just see the previous notes. You will be getting in the n loops. If it is forming the n loops, n number of the loops, small n. Here, if it is forming small n number of loops, okay, that is, in that case, mu n is equal to n by twice l root t by m. Now, one loop it is formed. I have drawn the diagram in the last class. Then mu1 is equal to 1 by twice l root t by m. It is the minimum frequency, called fundamental frequency or first harmonic. Then if n increases 2 loops, then it is 2 by 12 root t by m. It is second harmonic. It is here the third harmonic. And yaad rahe, second harmonic is the first overtone. That means nth harmonic is equal to n minus 1th overtone. nth हार्मोनिक इज इक्वल टू n माइनस 1th ओवरटोन. याद रहे ये सब टेक्निकल टर्म्स. अगर कभी कहता है ओवरटोन, तो ओवरटोन हार्मोनिक से एक कम रहता है. इस बात का ध्यान रखना जरूरी है. तो आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो दैट इन द सितार, गिटार, दिस stringed instruments, musical instruments, the sound of different frequencies are coming out because the string is plugged in the different modes and the different frequencies are coming out. Out of which the minimum frequency which is there, that is this. This is the minimum frequency. The first one, this is the minimum frequency. That is called the fundamental frequency. Fundamental frequency is always the minimum frequency which is emitted. Okay, minimum frequency of the sound which is emitted. That is called the fundamental frequency. This is all about the vibration in the stretched string. Our today's discussion is the vibration in the air column. In that, I will take it in the two parts. I will discuss it in the two parts. One is called the closed organ pipe. Here is the closed organ pipe. Look what happens. This is the pipe, uniform pipe, maybe metallic pipe, whose one end is closed, another end is open. Reflection takes place from this closed boundary. It is called the closed boundary. Reflection will be taking place from the closed boundary. What happens? Suppose if a tuning fork, let us see like this, if a tuning fork here is placed, a vibrating tuning fork is placed here just at the mouth of this pipe whose length is L, then what happens? Air में vibrations होता है, forced vibrations, and this forced vibration will send a wave in the positive x direction and then phase reversal होकर के फिर negative x direction में वो travel करेगा. Traveling wave किस direction में गया? Positive x direction में. क्यों गया? Forced oscillation के चलते. Here vibrating tuning fork is held near the mouth of this pipe. Then what happens? The forced oscillations, forced vibration will be taking place. Our traveling wave will be advancing in the positive x direction. Phase reversal के बाद फिर वापस आ गया. That means, I hope, dear students, you are very much can understand. It is very much similar to the strings case. In the strings case also, incident and reflected waves are given by y1. इंसिडेंट वाला कौन सा होगा? y1 is equal to r sin twice pi by lambda vt minus x, and reflected वाला क्या होगा? r sin twice pi by lambda vt plus x. Just like string, you can repeat the same derivation as the string, as we have done in the string. Now, in the different modes, here the stationary wave is formed. One wave is going like this, identical wave is coming, overlapped, both are. Here also, one wave goes like this, another wave comes. Here, and one wave goes like this, another comes. The different modes, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, the different modes of vibration have been shown in the figure.
These are the different modes, just like the string. In the string मैंने कहा था फर्स्ट मोड में एक लूप बनता है, सेकंड मोड में दो लूप बनता है, ऐसे यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट मोड में हाफ, एक तरह से ऐसा, ये एक वेव का हाफ है कि नहीं, ये 3/2 पोर्शन ऑफ द वेव, ये 5/2 पोर्शन ऑफ द वेव, ऐसे बन रहा है। तो यहां पर भी इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स आर लाइक दिस, एंड सिंस हियर just I repeat it again and again, just like in the case of the string, the phase reversal is taking place. That's why it is according to the superposition principle, y is equal to y1 plus y2. This is positive but this will be negative. तो ऐसे बन जाएगा, और इसका ये एक्सप्रेशन तक इट इज सेम एज, मैं एक बार फिर से बता दूं, यहां तक सेम एज द वाइब्रेशन एंड द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब तुम बोलोगे ये कैसे आया, यू कैन रेफर टू द प्रीवियस नोट्स, आई हैव डन इट, साइन सी माइनस साइन डी वाले एक्सप्रेशन से ये आया। अब क्या लगेगा, बाउंड्री कंडीशन लगेगा। मैंने कहा था लास्ट क्लास में, बाउंड्री कंडीशन कैसे लगता है, ये जो बाउंड्री है जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको x इक्वल टू 0 मानो, और ये वाला पॉइंट को x इक्वल टू l मानो। ऑलवेज आई एम कंसिडरिंग दैट पॉइंट from where the reflection is taking place as x इक्वल टू 0, another point as x इक्वल टू l। ओके फाइन, हियर नोड इज फॉर्म्ड, मैं यहां पे लगाता हूं, अब मैं लगाता हूं यहां बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन लगाइए, क्या होगा, फॉर x इज इक्वल टू 0, अगेन इन दिस एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू 0, तुम जानते हो साइन 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0, दैट इज ट्रू, फाइन। लेकिन यहां पर बाउंड्री कंडीशन यहां तक स्ट्रिंग में भी हो रहा था, लेकिन फॉर x इज इक्वल टू l, जब l यहां पर लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, देखो एंटी नोड बन रहा है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ क्या, ये एक्सप्रेशन x पर डिपेंड करेगा, तो साइन ट्वाइस पाई x बाई ट्वाइस पाई l बाई लैम्डा, इट शुड बी प्लस माइनस 1, क्योंकि ये मैक्सिमम होना चाहिए, बिकॉज y मैक्सिमम है, ठीक है ना। व्हाट हैपेंस, यहां लिख देते हैं एज y इज मैक्सिमम, मैक्सिमम अगर है तो इसका वैल्यू प्लस माइनस 1 होना चाहिए, प्लस माइनस 1 होने का मतलब क्या है, ट्वाइस पाई l बाई लैम्डा जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 होना चाहिए, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ट्रिग्नोमेट्री, यानी हमको क्या मिलेगा, यहां से पाई और पाई यहां से कैंसिल हो जाएगा, सो लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच, इट शुड बी 4l बाई ट्वाइस n माइनस 1। दिस इज, आई कैन राइट लैम्डा n, सो frequency nu n should be v by lambda n, v by lambda n, और v का वैल्यू क्या लिखोगे, चूंकि यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव का फॉर्मेशन हो रहा है, अंडरस्टैंड, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा एन v के जगह पर लिखेंगे रूट गामा p बाई रो। मुझे लगता है सबको क्लियर होगा, या ऐसा करो, या तुम ऐसा करो, पहले इसका वैल्यू को पुट करो, v डिवाइडेड बाई व्हाट इज लैम्डा एन, 4l इंटू ट्वाइस n माइनस 1। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, न्यू n इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा इट इज रूट गामा p बाई रो इंटू ट्वाइस n माइनस 1 बाई 4l। दिस इज व्हाई, ये क्या वैसा, एज v इज इक्वल टू रूट गामा p बाई रो फॉर longitudinal wave, sound wave is a longitudinal wave, और इसके थ्रू से यहां पर ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव फॉर्म, सॉरी हियर लॉन्गिट्यूडिनल स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड। ये जो स्टेशनरी वेव है ये लॉन्गिट्यूडिनल है, लॉन्गिट्यूडिनल के लिए ऐसा एक्सप्रेशन होता है, फॉर n इज इक्वल टू 1 न्यू 1
n का वैल्यू 1 हो जाएगा तो कितने के बराबर होगा, n का वैल्यू अगर 1 होगा तो कितने के बराबर होगा, 1/4l रूट गामा p बाई रो। n इज इक्वल टू 2 होगा तो कितना होगा, न्यू 2 इज इक्वल टू 3/4l रूट गामा p बाई रो। n इज इक्वल टू 3 होगा तो कितना होगा, न्यू 3 इज इक्वल टू 5/2l रूट गामा p बाई रो। एंड ऑब्वियसली एंड सो ऑन। तो हमें क्या मिला यहां से, हमें मिला यहां पर क्या मिल रहा है, इट इज द फर्स्ट हार्मोनिक, है ना, ये क्या है, थर्ड हार्मोनिक, ये क्या है, फिफ्थ हार्मोनिक। इसका मतलब हुआ ओनली ऑड हार्मोनिक्स, आर प्रेजेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक कंक्लूजन मिला हमें। क्या कंक्लूजन मिला, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, इवन हार्मोनिक्स नहीं है, सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। इसका मतलब हुआ कुछ हार्मोनिक्स एब्सेंट है। क्वेश्चन एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस इन दिस केस व्हाट वी आर गेटिंग, ओनली द even harmonics, only the odd harmonics are present. That means even harmonics are not there. That means all harmonics are not present in the closed pipe. ठीक है, closed pipe के केस में हमें क्या मिला, only the odd harmonics। तो क्वेश्चन दे सकता है कि prove that in case of a closed pipe only the odd harmonics are present। ये डेरिवेशन हो जाएगा, only odd harmonics are present। ठीक है ना। इन दिस स्ट्रिंग में ऐसा नहीं था, स्ट्रिंग में सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट था, लेकिन इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स है। देखो कैसा, फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या है, यहां देखो फ्रीक्वेंसी का रेशियो ν1 is to ν2 is to ν3 and so on is equal to 1 is to 3 is to 5 and so on। इसका मतलब क्या हुआ, what does it mean? It means only the odd harmonics are present। This is about our this you can say closed pipe। So I hope dear students you have understood what is happening in a closed pipe, right? This is one in case of the closed pipe। Now in the next lecture we shall discuss the open pipe। In case of the open pipe the boundary is open, here the boundary is closed। closed boundary में क्या होता है, फेज रिवर्सल होता है। ओपन बाउंड्री में फेज रिवर्सल नहीं होगा, जो कि ओपन पाइप में होगा। ओपन पाइप में कोई फेज रिवर्सल नहीं होगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। सो दिस इज अबाउट द क्लोज्ड पाइप।